Hello students, welcome to ePhysics. Here we learn the concepts of physics more conveniently. My name is Ghosh, and in this channel, series of online classes will be available for your class 11 and 12 physics on a regular basis. We also discuss important questions and some selective numericals from every chapter, and I think this will be very helpful for your IIT JEE preparation, your Neet preparation, or any other entrance you are going to prepare. So please stay tuned to this channel, and if you like the classes, then share with your friends and subscribe the channel. So today we should discuss a very important law of electrostatics, and this is Coulomb's law. And the topics to be discussed today is written on the board. Number 1 is Coulomb's law, number 2 is the vector form of Coulomb's law, and number 3 is the units of charge. We shall discuss about the CGS and SI units of charge and define them. So this is our topic. So we shall start from a very simple conception of electrostatics that we have read in 10th standard. And what is that conception? We know that the charged particle having an intrinsic property. What is that property? The property is that every charged particle applying some force to other charged particle around it. This is the intrinsic property of a charged particle. And we also know that same charged particle, that means positive charged particle को repel करते हैं और negative को repel करते हैं, and similarly positive negative charge को, that means different charged particle attracts each other. We know that. जैसे हम लोग magnet में देखें, same pole repel each other and different pole attracts each other. वैसा ही. So today we calculate the amount of this force between the two charged particle with the help of Coulomb's law. You know, this is the fundamental law of electrostatics, and it has wide applications in many other branches of physics. We frequently apply this law in modern physics, in magnetism, in electronics also. So we have to understand the concepts of Coulomb's law very clearly. So चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे. So you know, this law was invented by French physicist Coulomb, and he used an instrument known as the torsion balance. He used an instrument known as the torsion balance. Torsion balance. This is the instrument by which he measured the amount of force between the two charged particles, and he says that the force between the two charged particles depends on various factors. So चलिए देखते हैं Coulomb's law का जो statement है उसको हम पहले देखेंगे, और उसके साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप उसका जो कंडीशंस है और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द Coulomb's force उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So first we should see the statement of Coulomb's law. I have written the statement on the board, and I have included all possible conditions of Coulomb's law. So this is a very good statement for you. तो चलिए देखते हैं. In a particular medium, force between two point charged particle at rest is directly proportional to the product of the magnitude of their charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. This is the statement of Coulomb's law. आपका एग्जाम में अगर आएगा आपको इसी स्टेटमेंट को लिखना होगा. So once again I am repeating the statement. In a particular medium, force between two point charged particle at rest is directly proportional to the product of the magnitude of their charges and is inversely proportional to the square of the distance between them. This is the statement of Coulomb's law. Now
step by step we should see what are the conditions and what are the various factors influencing the Coulomb's force. So this is a very important topic because in your board exam at least one question comes from this topic every year. So we have to learn very clearly Coulomb's law, and it has many application in other part of physics also. तो पहले हम लोग देखेंगे इसका जो कंडीशंस है उसको हम देखेंगे. What are the conditions? Conditions of Coulomb's law. The first condition is this law is applicable for point charge particle only. So पहला condition हम लोग लिखेंगे. Number 1, this law is applicable for point charge particle only. This law is applicable for point charge particle only. And number 2, this is the important condition, that is the charged particle must have to be in rest. That means there is no motion between the two charged particle. There is no relative motion between the two charged particle. उस charged particle को rest में ही रहना होगा, तभी हम लोग Coulomb's law को apply कर पाएंगे. Because if there is a motion between the two charged particles, so in that case electromagnetic force comes into play. So in that case Coulomb's law हम लोग apply नहीं कर पाएंगे. So this is the second condition. That means the charged particles must be in rest or stationary. That means it is applicable for stationary charged particle. And number 3, this is a very important conditions of Coulomb's law, that is if the distance between the two charged particle is less than 10 to the power minus 15 meter, 10 to the power minus 15 meter से कम होगा अगर, क्या distance between two charge particles. दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस 10 to the power minus 15 मीटर से कम होगा तब हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. These are the 3 conditions of Coulomb's law. अगर आपकी एग्जाम में Coulomb's law का लिमिटेशंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आप इस 3 पॉइंट को लिख देंगे. These are the limitations of Coulomb's law also. Now, first point को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. This law is applicable for point charge particle only, but in our real world, the charged particle without mass, that means point charge particle का conception क्या है? उसका कोई मास नहीं रहेगा, उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं रहेगा. पॉइंट का तो कोई वॉल्यूम होता नहीं है, तो पॉइंट का अगर कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा तो उसका मास भी नहीं रहेगा. सो दिस इज एन आइडियल कंसेप्शन, दैट इज इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली. तो यहाँ पे इस टर्म का यूज क्यों किया? इसको क्लियर करने के लिए कि द डायमेंशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, very carefully listen that point, the dimension of the charged particle is very small compared to the distance of separation between the two charged particle. इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो point charged particle, इस टर्म को हम लोग यूज किया, क्योंकि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आते हैं. विदाउट मास देयर इज नो चार्ज पार्टिकल exists. So this is an imaginary conception, but
here in the statement this term is used because to clarify this point that the dimension of the charged particle is very small comparable to the distance of separation between the two charged particle. इसको clear करने के लिए ये point को यहाँ पर लाया गया. One more thing, this is a very important point. कभी-कभी हम लोग ये देखें when we are measuring the force or when we are calculating the force between the two spherical body, so in that case we can easily apply the Coulomb's law. So this is applicable for extended body also. तो ये extended body के लिए भी apply हो सकता है. कभी-कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों स्फीयर हैं, उसमें थोड़ा दोनों का बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है, इसमें Q1 चार्ज दिया हुआ है, इसमें Q2 चार्ज. सपोज both the charges are positive. So we know that charge always on the outer surface of the sphere. So इस इन दोनों स्फेरिकल बॉडी के बीच में हम लोग अप्लाई कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग फोर्स निकल सकते हैं. बट here it states that it is only applicable for point charged particle, because one very important thing I just want to share with you that it is applicable for extended body which has a spherical symmetry. Keep it in your mind. That I have to check my camera whether it is recording or not. Okay. So this is a very important point. It is applicable for extended body. So in that case the body must have to be spherical symmetry. So अगर spherical symmetry होगा तो हम लोग Coulomb's law को apply कर पाएंगे. तब हम लोग कैसे करेंगे? So we in that case we consider that the whole amount of charge in this sphere is concentrated at the center. Whole amount of charge is concentrated at the center of the sphere. Similarly, for this sphere, the whole amount of charge Q2, this is concentrated at the center of the sphere. That means इसका जो total charge है, उसी total charge को मिला के जितना charge होगा, वो उतना ही charge. That means Q1 charge इसका center में है और इसका भी center में दोनों charge concentrated है. इसको सोच के हम लोग Coulomb's law को apply करेंगे. So in that case this becomes a point charged particle, so we can easily apply this law. So this is a very important point. That means Coulomb's law is applicable for point charged particle. This is true, but one thing, that point charged particle, charge without mass does not exist in the universe. So in that case what is the conception of point charged particle? Because charged particle का अगर कोई वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो चार्ज पार्टिकल को मास भी नहीं रहेगा. So this is an ideal conception. So इसमें इसको क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया कि the dimension of the charged particle is very small comparable to the distance between them. So this is why the point charged particle term is used in this law. So these are the three conditions. आप इसको limitation भी कह सकते हो. पहला condition है it is applicable for point charge. Second is the charged particle must be stationary or rest. उसमें कोई charged particle के बीच में कोई motion नहीं होना चाहिए. A third one is, this is a very important point. This law is not applicable if the distance between the two charged particle is less than 10 to the power minus 15 meter. And one question I just remember, that is within the nucleus having a very small size with respect to the whole atom. You know that. So within the nucleus, this is a very small place, and in this place charged particle proton are gathering inside the nucleus. But
still they are in a concentrated condition. How this is possible? Because Coulomb's law says the like charged particle always repel each other. So in that case, the total structure of the nucleus will be vanish. तो तब क्या होगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं स्टे करेगा, तो उसको क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण वो दो चार्ज पार्टिकल, दो प्रोटॉन जो है उसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा उसमें क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर जाएगा. बट here is the answer of these questions, that is the Coulomb's law is not applicable if the distance between the two charged particles is less than 15 meter, and we know that the dimension of the nucleus is in the order of 10 to the power minus 15 meter. This is the answer why the positively charged proton particle gathered in a very tiny place within the nucleus in spite of the Coulomb's repulsive force, and we know that there is a very strong attractive force which is known as the nuclear force is applying on the particles within the nucleus, and that this is the conception. Now we should go to the second step, that is the factors influencing the Coulomb's force. That means दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम लोग देखेंगे. तो इसको हम मिटा देते हैं. अगर कोई इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए. हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं. Now we should see the factors influencing Coulomb's law. Factors influencing Coulomb's force, or the force between the two point charged particles. So in the statement we have seen that the force between the two charged particles depends on the medium. So अगर medium हम लोग change करेंगे, so in that case the amount of force between the two charged particles also changes. So medium is a very very important factor. Medium is an important factor. That means the पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करते हैं, this is the medium. Now the second factor, that is the force between two charged particles is directly proportional to the product of the magnitude of their charges. That means it depends on the magnitude of the charges. And number 3, this is, it depends on the distance between two charged particles. That means the factors influencing the Coulomb's law, Coulomb's दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स वो दिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. पहला है मीडियम. अगर हम लोग मीडियम चेंज करेंगे सेम चार्ज पार्टिकल को सेम डिस्टेंस में रख के, so in that case due to the change in the medium the force between the two charged particles also changes. And the second point is magnitude of the charges. That means the force between two charged particles is directly proportional to the product of the magnitude of their charges that we have seen in the statement of the Coulomb's law. And third one is that
the distance between the two charged particles. That means force is inversely proportional to the square of the distance between them. This is the three factors on which the force between the two charged particles depends. Now, one interesting question from this point, that is, it depends on the medium. तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े. तो what are the main difference between Newton's law of gravitation and the Coulomb's law? Because अगर हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या, both the forces are inverse square force and both the forces are conservative force. इस छोटा छोटा पॉइंट को आप नोट करके रखिए. both the forces are inverse square force and both the forces are conservative force. But there are some difference between Coulomb's law and the Newton law of gravitation. So पहला जो डिफरेंस है, दोनों मास के बीच में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते. बट इन केस ऑफ Coulomb's law, we are saying if we change the medium keeping all other quantities same, so in that case due to the change of a medium, the force between the two charged particles changes. And second difference is that Coulomb's law दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आप Coulomb's फोर्स इसको कह सकते हो, this force may be repulsive, may be attractive depending on the nature of the charged particle. But in case of law of gravitation, Newton's law of gravitation, the force is only attractive. These are the two basic difference between the Coulomb's law and Newton's law. आप यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिख के रख सकते हो, what is the difference between Coulomb's law and Newton's law of gravitation. तो अब हम देखेंगे what is the mathematical expression of Coulomb's law. So उसको हम लोग देखेंगे. Mathematical expression of Coulomb's law. So इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे. तो पहले हम लोग, सपोज these are the 2 point charged particle Q1 and Q2 separated at a distance r, and the particle are kept in free space. इसको फ्री स्पेस और वैक्यूम में हम लोग प्लेस किया. Now by applying the Coulomb's law, we measure the amount of force between these two charged particles, and we know that first point is force is directly proportional to the product of their charges, and second point is F is inversely proportional to the square of the distance between them. 1 upon r square means this is inversely proportional. So the final expression of Coulomb's law will be K Q1 Q2 upon r square. This is the final expression of Coulomb's law, and it gives the amount of force between the two charged particles kept at a distance r in the free space or vacuum. So here K is a constant. You can say K is a constant of proportion. Sometimes we call the constant quantity K as a Coulomb's constant. This is Coulomb's constant. Coulomb's constant भी हम लोग इसको कह सकते हैं. One more important point to be noted, that is K is not a dimensionless or unitless quantity. It has a specific dimension and units, and
the value of k, this is k, the value of k depends on the medium. दिस इज, अगर हम लोग मीडियम चेंज करते जाएंगे सो दिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होगा. इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. ओके, सो दिस इज द Coulomb's कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. इसको ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेंगे. सो इसको हम देखेंगे. नाउ वी शुड गो टू द सीजीएस एंड एसआई सिस्टम में Coulomb's लॉ का फॉर्म कैसा होगा उसको हम जल्दी से देख लेंगे. व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ इन सीजीएस एंड इन एसआई सिस्टम. दैट मींस अगर हम चार्ज को और डिस्टेंस को सीजीएस सिस्टम में मेजर करेंगे तो उसका फॉर्म कैसा होगा, और अगर हम इसको एसआई सिस्टम में दैट मींस चार्ज को कूलम में और डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे तब इसका फॉर्म कैसा होगा उसको थोड़ा सा देख लेंगे. बिकॉज आपकी एग्जाम में कभी कभी इसको पूछते हैं. तो पहले एसआई सिस्टम में इसका फॉर्म और सीजीएस सिस्टम में इसका फॉर्म कैसा होगा इसको हम देखेंगे. So this is the mathematical expression of Coulomb's law. In SI system, the value of the force is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, where K, the Coulomb constant, is equals to 1 by 4 pi epsilon 0, and in CGS system F is written as 1 by K. This is the small k. Okay, Q1 Q2 upon R square. The value of capital K is equals to 1 by small k. This is small k. Now step by step we should discuss that. Here epsilon 0 is a quantity. It is a very new quantity and it is known as the permittivity of the medium. Epsilon 0 is a quantity known as the permittivity of medium. तो यहाँ पे हम लोग मीडियम तो कोई नहीं है, फ्री स्पेस में हम लोग इसको लिए. तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का परमिटिविटी, आप इसको परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम भी कह सकते हो, और कभी कभी हम इसको क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ एयर. एयर मीडियम के लिए भी हम लोग इसको कभी कभी यूज करेंगे. इन दिस लॉ द स्मॉल के denotes dielectric constant. This is known as the dielectric constant of the medium. तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे. So very quickly we should see epsilon 0 is the permittivity of the free space, or the permittivity of the vacuum, or you can say the permittivity of the air also, and it has a constant value. The value of this permittivity epsilon 0 is 8.85 into 10 to the power minus 12. यहाँ से हम लोग इसका यूनिट भी निकल सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन per meter square. But for the air medium or for the free space or for the vacuum, the value of K is equals to only 1. This is 1. For air medium, for free space, the dielectric constant has the value 1. That means the Coulomb constant, the capital K, having the value in CGS system is equals to 1, whereas in SI system this value, if we put the value 8.85 into the minus 12 here, so in that case this will be 9 into 10 to the power 9.
this will be the value of this. So the form of Coulomb's law, इसको हम मिटा देते हैं. So the form of Coulomb's law in CGS system will be only F is equals to, in air medium, F is equals to Q1 Q2 upon R square. This is the form CGS. And in SI system, this will be F is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, or F is equals to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square. This is the expression of Coulomb's law in SI system. These are the form of Coulomb's law in 2-unit system. So तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखे, उसके बाद इसका जो कंडीशंस था उसको हम देखे Coulomb's law का. Next we have discussed about the various factors influencing the Coulomb's force between the two charged particle, and next हम लोग देखे what is the mathematical expression of Coulomb's law, and in that expression we have seen a very important quantity, important constant, that is known as the Coulomb's constant, and this is represented by the capital K, and this the property of this constant and the value of this constant depends on the medium. एंड उसके बाद हम लोग क्या देखें, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ का फॉर्म क्या होगा उसको हम लोग देखें. एंड फ्रॉम दिस और भी हम लोग देखें कि एप्सिलॉन 0 इज ए न्यू क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज द परमिटिविटी of the free space, and it has a specific value. This is 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square per Newton per meter square. And here small k in CGS form of Coulomb's law, here small k is a constant quantity known as the dielectric constant. इस dielectric constant के बारे में हम लोग next class में इसको detail discuss करेंगे. But for air medium it has a value k is equals to 1. एयर मीडियम के लिए और फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए के. सो कूलम्स कांस्टेंट का एसआई सिस्टम में वैल्यू है 9 into 10 to the power 9, whereas कूलम्स कांस्टेंट का सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू होगा k is equals to 1. ऑब्वियसली इसको आपको मेंशन करना होगा फ्री स्पेस और एयर मीडियम के लिए. So these are the expression of Coulomb's law in CGS and in SI system we have discussed. Now very quickly we should see what is the form of Coulomb's law in any other medium except vacuum or free space. इसको हम मिटा देते हैं. अगर आपको इसको नोट करके रखना चाहते हो और इसको तुरंत से इसको स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज आपको तुरंत मिल जाएगा, ताकि जब हम अब जब बाद में इसको रिपीट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे तब इसको बहुत ही काम में आएगा. Now, in any other medium इसका जो एक्सप्रेशन होगा 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Here epsilon is the permittivity of the medium. अगर दूसरे किसी मीडियम में हम रखेंगे तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. एंड वन मोर थिंग, दैट इज epsilon, the value of permittivity having the, this is very important, please note it, that value of permittivity epsilon 0 has the minimum value. That means in free space permittivity having the minimum value. अगर दूसरा किसी भी मीडियम में आप अगर चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, so in that case the value of epsilon will be greater than epsilon 0. That means epsilon 0 is the minimum value. So अगर epsilon 0 minimum होगा
इस इक्वेशन में अगर एप्सिलॉन 0 मिनिमम होगा तो दोनों सेम चार्ज पार्टिकल को अगर हम सेम डिस्टेंस में फ्री स्पेस में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। ध्यान से देख सुनिए, epsilon 0 is the permittivity of the free space and it has the value minimum value। अगर दूसरे किसी भी मीडियम में आप जाएंगे तो एप्सिलॉन जो परमिटिविटी का वैल्यू होगा वो उससे ज्यादा होगा। इसका मतलब दिस वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू। अगर इस टर्म को हम मिनिमम वैल्यू देके डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट if in the other medium this value is greater than the value of epsilon 0, so in that case अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो f और फोर्स का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा सा कम होगा, this will be smaller। so फ्री स्पेस में और वैक्यूम में दोनों सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स, ये वैक्यूम v रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फ्री स्पेस में कहते हैं, एंड दिस इज इन द मीडियम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दैट मीन्स अगर हम फ्री स्पेस को छोड़ के सेम चार्ज पार्टिकल को, दोनों सेम चार्ज पार्टिकल को दूसरे किसी मीडियम में अगर हम सेम डिस्टेंस में रखेंगे तो फ्री स्पेस की रिस्पेक्ट से उसका फोर्स का जो वैल्यू होगा वो थोड़ा कम ही होगा, हमेशा के लिए वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि this is the relation Fv, that means force in vacuum will be greater than the force in any other medium। इस छोटे पॉइंट को हम अब थोड़ा सा रिमाइंड करके रखिए। so these are the Coulomb's law and mathematical expression। CGS SI सिस्टम में इसका क्या फॉर्म होगा वो भी हम लोग देखें। और one more thing, that is in any other medium it has the form only epsilon naught or epsilon 0 is replaced by the epsilon। this is the permittivity of the medium, so it has the minimum value in free space and force having the maximum value। अगर ये minimum हुआ तो force को maximum होना ही होगा, because ये expression तो ऐसे ही बताता है। okay, so this was the Coulomb's law। I hope all of you have understand the concept of Coulomb's law very well, and now we should go to our second topic, that is the vector form of Coulomb's law। and this is very important for your board exam, because board exam में कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन सबको पूछते हैं, what is write down the vector form of Coulomb's law, तो ऐसा करके। तो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। So the vector form of Coulomb's law, so we shall use a very simple conception of vector। so हम उसको यूज करेंगे, because why we find out the vector notation or vector relation of force between the two charged particles, because you know that force is a vector quantity, so it is better to express the Coulomb's law in vector notation। so that is why we should express the Coulomb's law in vector notation। first we should take a Cartesian coordinate system। it's a very simple conception and we use a very simple knowledge of vector। first we should take a Cartesian coordinate system। this is the Cartesian coordinate system, and these are the 2-point charged particle q1 and q2, and position vector of this 2-point charged particle is r1 and r2 respectively, because this is in the vector space। so that's why the position of q1 charged particle is r1 and this is r2, represented by the two position vector r1 and r2। now we have to calculate the amount of force between the two charged particle, that means the mutual force between the two charged particle in vector form। so first what we should do,
we have to calculate the distance between these two charged particle q1 and q2. q1 q2 charged particle के बीच में जो distance है, बीच का जो distance है उसको निकालना होगा. But one thing we have to remember that this distance will be in the vector form, because इस पोजीशन वेक्टर की यूज करके, इस दो पोजीशन वेक्टर को यूज करके और वेक्टर का जो छोटा सा एडिशन का जो एक ट्रायंगुलर लॉ था उसको हम अप्लाई करके इस दोनों चार्ज पार्टिकल का बीच का जो डिस्टेंस उसको हम लोग निकालेंगे. सो चलिए, दिस इज द डिस्टेंस. ओके, सपोज दिस चार्ज पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. This both the charged particle having positive charge. So in that case, there will be a repulsive force between them. Repulsive force, and the force का direction क्या होगा? In this direction, and this will be in this direction. But the magnitude of the force will be same. And दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो किस लाइन के ऊपर, किस Q1 Q2 का जो ज्वाइनिंग लाइन है उसका ऊपर ही उसका डायरेक्शन क्या होगा, डिपेंड करेगा. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ R1 and R2. Now the amount of force on Q2 due to charge particle Q1, that means Q2 चार्ज पार्टिकल का ऊपर कितना फोर्स होगा Q1 के लिए, पहले हम लोग उसको निकालेंगे. So this will be a repulsive force. That means the position of charge particle Q2 with respect to Q1 will be, if we represent it by R21, position of particle 2 with respect to charge particle 1, R21 is equals to R2 minus R1. कैसे आया ये एक्सप्रेशन? दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रायंगुलर लॉ हम लोग यूज किए. R1 and this vector, suppose we are taking this vector is R21. So R1 and R21 सेम ऑर्डर में है. R1 and R21 सेम ऑर्डर में है, but R2 is that in the different order. So R1 plus R21 is equals to R2. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में तो ऐसा ही स्टेटमेंट था कि अगर सेम ऑर्डर में रहेगा दोनों वेक्टर तो ऑपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर होगा उन दोनों का सम होगा ऑपोजिट वेक्टर में, ऑपोजिट ऑर्डर में जो है उसका साथ सेम होगा. सो R21 is equals to R2 minus R1. That means the position of Q2 with respect to Q1, and we are going to calculate. So this is the distance between them. Q1 की respect में position of Q1 with respect to position of Q2 with respect to Q1. Now अगर Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 के ऊपर एक फोर्स देगा तो Q2 भी तो Q1 के ऊपर एक सेम एंड ऑपोजिट फोर्स देगा, because there is no other external force present in this area. So the position of Q1 with respect to Q2 will be R12 is equals to R1 minus R2. The same triangular law of vector addition we have applied. That means दोनों चार्ज पार्टिकल का बीच का जो डिस्टेंस है वेक्टर में वो डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके. अभी क्या होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, एंड R21 वेक्टर भी उसी की तरफ होगा. सो R21 cap is the direction of the force on Q2 due to Q1, and similarly R12 cap, this is an unit vector along R12 and it gives the direction of force on Q1 due to Q2. So very simply we should write the Coulomb's law. Now the force on Q2 due to Q1 is F is equals to, एक्सप्रेशन तो हम लोग जानते हैं,
इसको हम फ्री स्पेस में रखें 1/4πε0 Q1 Q2, ये तो वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, Q1 Q2 ऐसे लिख दिया। और इसमें क्या होगा 8 to 1, ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा 8 to 1। ये तो अभी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है उसको लेके उसका स्क्वायर कर देंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड we have to give the direction of force because now we are expressing the Coulomb's law in vector form. So F is equals to R to 1 cap. This is the unit vector. So this is the amount of force on Q2 due to Q1. Similarly, force on Q1 due to Q2 will be, and this is represented by one thing 1 2 2 के ऊपर 1 के लिए 4। Similarly, F12 is equals to 1/4πε0 Q1 Q2। अभी इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 2 इसका स्क्वायर और इसका भी डायरेक्शन देना होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। So R12 cap. So these are the unit vectors of, that means force on Q1 due to Q2 as force on Q2 due to Q1. And now we are seeing the distance, magnitude of the distance is same. R21 is equals to mod R12। दोनों जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट R21 is equals to minus R12। R21 R12 के ऑपोजिट है, क्योंकि हम लोग दोनों सेम चार्ज लिए, तो सेम चार्ज के लिए इसका रिपल्सिव फोर्स इस तरफ होगा और ये जो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इसका इधर। नाउ इफ वी पुट दिस रिलेशन, if we put this relation in any one of these two equations, then we can see that very easily हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, F21 is equals to minus F12, and this is nothing but the Newton's third law. That means if there is no external force applying on these two charged particles, only mutual attraction or repulsive force is there. So in that case, force on Q2 due to Q1, that is, this is the action force. If we imagine that this is the action force, so similarly Q2 gives a reaction force to Q1, and that this will be F21 is equals to F12, but both the force having the same magnitude but the direction will be different. So this is the vector form of Coulomb's law। and आपकी एग्जाम में अगर इसको आएगा आप छोटे से लिखेंगे, छोटा करके कि सपोज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम Q1 and Q2 point charge at rest in a free space, and it has the position vector in Cartesian coordinate system is R1 and R2 respectively. Now the position of charge Q2 with respect to Q1 is equals to R21 equals to this, and the position of Q1 with respect to Q2 is equals to this. Now the force on Q2 जैसे हम ले लिखे ऐसे छोटा करके आपको लिखना होगा। So this is the vector form of Coulomb's law, and we have expressed in the vector form because we know that force is a vector quantity, and that's why all the other quantities is treated as a vector quantity. But Q1 Q2 तो चार्ज है, इसका तो कोई ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो इसलिए Q1 Q2 को स्केलर क्वांटिटी रख के हम लोग ये एक्सप्रेशन किए। And one more thing, we can express this law in this form also, because we know that unit vector R21, हम एक इसको लिख दे रहा है R21 unit vector, this is equals to R21 vector divided by magnitude of R21 vector. If we put this value R21 कैप का वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर, इसका क्यूब हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे R21 क्या का वैल्यू पुट करेंगे तो ये और एक तो आ जाएगा, तो इसमें क्यूब हो जाएगा और इसमें क्या होगा R21 का वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर आपकी एग्जाम में ऐसी फॉर्म में दे देगा तो फाइंड आउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ, द एक्सप्रेशन अगर दे देगा तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर फॉर्म इन कूलॉम्स लॉ। सो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी कूलॉम्स लॉ का जो टॉपिक के बारे में हम आज का यहाँ पर टॉपिक लगाया उसको आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओके, नाउ वी शुड गो to our next topic, that is the units of charge. So our third topic, that is units of charge. What is the unit of charge in SI system? You know that this is coulomb, and the unit of charge in CGS system, that is the stat coulomb, and sometimes we called it as ESU. That means in SI system में चार्ज का जो यूनिट होगा वो कूलॉम एंड इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और CGS सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट है स्टैट कूलॉम और इसको हम ESU भी कहते हैं। These are the two units of charge in CGS and in SI and CGS unit system. So here we shall define coulomb, what is 1 coulomb and what is 1 stat coulomb with the help of Coulomb's law. So once again I am writing the expression of Coulomb's law in SI system, that is F is equals to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square. Here F is equals to Q1 Q2 upon R square, because इसका जो कूलॉम कांस्टेंट का जो वैल्यू था वो 1 हो गया था तो इसलिए ये 1 है। So these are the forms of Coulomb's law in SI and CGS system. Now if we take the two charged particle Q1 equals to Q2 equals to 1 coulomb and the distance R is equals to 1 meter, so in that case if we put this value in this equation, so F is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton. Okay, one thing here, all the quantities will be measured in CGS system. So in that case Q1 is equals to Q2 equals to 1 ESU or stat coulomb, R is equals to 1 centimeter. If we put the value in this equation, then F will be 1 dyne. Sorry, F is equals to 1 dyne. That means we are saying that the 1 coulomb charge, दोनों 1 coulomb charge particle, this is 1 coulomb, this is 1 coulomb charge particle, इसका बीच में अगर 1 meter distance होगा, so in that case the force of repulsion, if the charge particle is positive, suppose we are taking the positive charge particle, so the force of repulsion between these two charge particle will be F is equals to 9 into 10 to the power 9 Newton. Similarly 1 ESU charge, दोनों 1 ESU charge को 1 ESU पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसका बीच में
1 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस रहेगा, so the force of repulsion will be 1 dyne. This gives the definition of 1 coulomb and 1 ESU charge. So we shall define 1 coulomb and 1 ESU charge. Now, so this is the mathematical form of SI and CGS unit system, and now we shall define 1 coulomb and 1 ESU charge. First we define 1 stat coulomb charge. Listen very carefully. आप इसको लिख के भी रख सकते हो. 1 stat coulomb charge is said to be that amount of charge if it experiences a force of repulsion of 1 dyne when we placed them in vacuum at a distance of 1 centimeter from an equal and similar charge. This charge, so in that case, the charge particle having the charge of 1 ESU. And similarly, we can define the Coulomb's law. Very easy. स्टैट कूलम की जगह में हम लोग 1 कूलम बोलेंगे और उसका बीच का जो फोर्स है उसको 1 डाइन की प्लेस में हम लोग क्या लगाएंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन लगा देंगे, और दोनों फोर्स का बीच, दोनों चार्ज का बीच में जो डिस्टेंस था, इसमें 1 सेंटीमीटर था, इसमें 1 मीटर करेंगे, तो हमारा कूलम 1 कूलम का डेफिनेशन बन जाएगा. सो 1 कूलम चार्ज इज that amount of charge, or 1 coulomb charge is said to be that amount of charge if it experiences a force of repulsion of the magnitude 9 × 10⁹ Newton when we placed them in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge. So in that case, we call them the both charge particle having the charge 1 coulomb. So these are the two definition of 1 ESU or 1 coulomb charge. हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग कूलम को और स्टैट कूलम को दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो जब हम लोग हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होगा, तब हम लोग कूलम को 1 कूलम चार्ज को और 1 स्टैट कूलम चार्ज को करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्शन है उसमें से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम एंड 1 स्टैट कूलम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. And you know that electrostatics is a branch of physics which deals with the charge particle having in the rest, or it deals with the stationary charge particle. That is why it named as the electrostatic. That means it is applicable for static charge only. So Coulomb's law में भी हम लोग ऐसे ही देखें कि दोनों चार्ज पार्टिकल का बीच का जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करते हैं वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, और कंडीशन क्या था, वो चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में होना होगा. These are the statements. So I hope you have understand the three topic very well, and आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं. email ID is given with this video, and in our next class we shall discuss about the force between multiple charges, and which is known as the superposition principle, and one very important thing, that is the concepts of permittivity. What is the concepts of permittivity, and why the force between the two charged particle decreases when we place them in the medium, in any other medium. अगर हम फ्री स्पेस छोड़ के दूसरे किसी मीडियम में रखेंगे सेम चार्ज पार्टिकल को सेम डिस्टेंस में, बट द अमाउंट ऑफ फोर्स फ्री स्पेस के हिसाब से थोड़ा कम होगा. Why such a thing happening, and we explain the physical significance of permittivity. So इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. So this is our class.
Thank you and thank you for watching this video. Okay.